Next chapter, reproductive health. A very important chapter to the need point of view. बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से. Reproductive health. देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज. व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्शन प्लस हेल्थ इश्यू दोनों को कंबाइंड भी बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो हेल्थ related to the reproduction is called as what? Reproductive health. So number one, we will discuss about the problems and strategies. उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, बाकी चीज हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. Number two is what? Now what is the population growth and how the population explosion takes place in India? What are the conditions to control the human population? एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज में पूछता है. उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे होता है. मोर्टेलिटी, नैटिलिटी, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, देयर आर सो मेनी. बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. रिप्लेसमेंट लेवल एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट वी विल गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और मेथड्स. कंसेप्शन क्या है ना, प्रेगनेंसी. Prevention of pregnancy is called as what? Na contraception. So as to avoid the pregnancy, we need to go for the method related to contraception, called as what? Na contraceptive methods. Natural क्या है, artificial क्या है, temporary क्या है, permanent क्या है, example, mechanism. We will discuss all this. Very important. Next, we will go for what? Na sexually transmitted disease. And the last is the reproductive, that is assisted reproductive techniques. ठीक है. तो how the test tube baby form, what is ZIFT, what is GIFT, we will discuss there. So ये chapter बहुत ही ज्यादा important है. मैं बहुत ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं मेन पॉइंट तो टच करके जाऊंगा. So इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. The definition from that. देखिए as per WHO, the reproductive health means, as per WHO, World Health Organization, the reproductive health means well-being in physical, emotional, behavioral, and social aspect of reproduction. So give the heading. The reproductive health problems and strategies. The reproductive health problems and strategies. मैं खाली पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा हूं, डिटेल्स में आप लोग बाद में पढ़ेंगे. नंबर वन इज ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन यहां पे क्वेश्चंस बस आता है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ the RCH, and when the first family planning program
was initiated in India? जो क्वेश्चन आता है वही मैं अब डिस्क्रिप्शन करूंगा, अदरवाइज मैं स्किप करूंगा. तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम was initiated in 1951. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. In India. Which is called as what? A reproductive child healthcare program. And this is called as RCH. You need to remember the full form of RCH, Reproductive Child Healthcare Program, which is actually the family planning program initiated in India in 1951. इसी का उस family planning का जो पूरा नाम है उसका नाम है Reproductive Child Healthcare Program RCH. ये है number 1. Number 2, awareness about reproduction. We need to aware about the reproduction. ऑडियो विजुअल हो गया, प्रिंटिंग मीडिया हो गया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एटसेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अवेयर related to the reproduction. Number 3, sex education. Sex education should be that is common for all, and that is why the sex education has been introduced in India in the school and colleges, so as to aware the people, so as to know the adverse effect of any kind of activity related to that is reproduction. Number 4, knowledge of growth and reproductive organs. Growth of reproductive organs. So knowledge of growth of reproductive organs and sexually transmitted disease or sexually transmitted infection. So we have to get the knowledge about the growth of the reproductive organ. We know it. कि reproductive organ कैसे growth करता है with respect to the hormonal changes in the body. इसके ऊपर knowledge चाहिए. Sexually transmitted disease क्या है, कितने types का है, कैसे spread करता है, हम किसको STD को कैसे avoid करें, ये बहुत जरूरी है. It should be so that we will healthy with related to the reproduction. हम लोग को healthy रहना है reproduction related, तो हम लोग को knowledge चाहिए. Number 5, that is birth control device and care of mother and child. Birth control device and care of mother and child. You know, बहुत जरूरी है. अभी हम बात कर रहे थे birth control device means what? Contraceptive device. तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, टाइप्स क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट कैसे करता है, एग्जाम्पल क्या है, हाउ टू टेक केयर ऑफ द मदर, हाउ टू टेक केयर द बेबी और चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सब नॉलेज हम लोग को चाहिए. नंबर 6, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज. And sex related crime. It is a very important to prevent this type of sexual abuse.
Sexual abuse or sex abuse should be avoided. Sex related crime should be avoided. एंड एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए ये जो एविल्स है, ये जो एविलिक एक्टिविटी है, इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, सो दैट द हेल्दी सोसाइटी कैन बी फॉर्म. नंबर 7, इंफॉर्मेशन अबाउट reproductive related problems. So information about reproductive related problems. क्या क्या प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में? ना मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, डिलीवरी और पैचुरेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, then your abortion and sexually transmitted disease or sexually transmitted infection. So we need to inform with related to, we need to get the knowledge to information about these problems, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि menstrual problem related information should one know, otherwise menstrual related hygienic practice cannot be offered. तो ये इंफॉर्मेशन, ये सब एनसीईआरटी लाइन है जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं. जैसे आप पढ़िएगा कि जो आपको मैंने अभी बोला कि मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है एनसीईआरटी, इसीलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है. आप लोग पढ़िएगा एनसीईआरटी, आई होप सो. बार बार हम स्ट्रेस दे रहे हैं. एंड नेक्स्ट नंबर 8 इज एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस, देखिए एमनियोसेंटेसिस नॉर्मली होता क्या है? देखिए एमनियोसेंटेसिस में रोल क्या है? एमनियोसेंटेसिस हम लोग पढ़ते क्या है? ना विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, so withdrawal of amniotic fluid, a small quantity, so withdrawal of amniotic fluid in small quantity which contain the skin cells of embryo. क्योंकि आप लोग को पता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एम्ब्रियो की बॉडी के साथ फिजिकली कनेक्टेड है, एंड एम्ब्रियो का और फीटस का जो स्किन है, तो स्किन का कुछ सेल्स 100% will get in the amniotic fluid. By taking a sample of amniotic fluid, we will find the cells of the embryo, that is skin cells of the embryo in the amniotic fluid. And cells hai, we will get what? Chromosome. क्रोमोसोम में आपको जीन मिल जाएगा, एंड जीन से आप जेनेटिक डिसऑर्डर सब लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, एंजाइमेटिक एब्नॉर्मेलिटी एंड gene related abnormality or genetic disorder we can get through the process called as amniocentesis. So it is, इसका जो यूज है, यूज क्या हम लोग करते हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर,
क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, enzymatic abnormalities or enzymatic disorders, because we know that every enzyme is produced from one gene. तो अगर जीन डिफेक्टेड होगा तो एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटी और डिसऑर्डर तो पता चल जाएगा ना. सो एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मेलिटी that also can be determined by means of the amnio. तो ये यूज है कि मिसयूज है? लेकिन अगर हम उसको अब्यूज बोले मतलब मिसयूज हो गया यहाँ पे. तो व्हाट इज द मिसयूज? यहाँ पे हम लोग इसको मिसयूज किस तरीके से कर लेते हैं? यस, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. बिफोर बर्थ, मतलब प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड ये लीगल है कि इलीगल है? स्टैट्यूटरी बैन. इंडिया में स्टैट्यूटरी बैन है ये और इलीगल प्रोसेस. क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है कि ये कब किया जाता है? डन आफ्टर 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही एमनियोसेंटेसिस किया जाता है. एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 16 to 20 weeks. And mostly within 14 to 18 week. Usually ये 14 to 18 weeks के बीच में किया जाता है. Sorry, 14 to 16 week के बीच में किया जाता है. But it can be 16 to 20 after 15 week. लेकिन कभी कभी ये 14 में भी किया जाता है. सो मोस्ट केसेस में इंडिया में 14 to 16 के बीच में किया जाता है. एंड एमनियोसेंटेसिस तभी आप लोग को प्रेफर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है व्हेन सब काइंड ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री और पेडिग्री में आपका अगर कोई जेनेटिक रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी है देन उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं. एंड ये बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस है. बट इसका भी एक्यूरेट प्रोसेस और भी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ. बस खाली एमनियोसेंटेसिस के ऊपर आप लोग का फोकस रहना चाहिए. एंड आपको क्लियरली लिखा है, आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी में भी देखिएगा, द स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ व्हाट द फीमेल फेटिसाइड्स. ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द एम? ये जो स्टैट्यूटरी बैन है ये किसके लिए है? Why it is being statutory ban in India? To prevent the female infanticide. To prevent the female infanticide or female feticides, it is being statutory ban in India. To prevent it, so prenatal sex determination of the baby is completely banned. आपको पता है कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो है, इट इज नॉट हेल्दी सेक्स रेशियो. उसका एक कारण क्या है? फीमेल फेटिसाइड्स. अगर हम लोग बिफोर बर्थ फीमेल फिटस डिटरमिन कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा ऐसे आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि भाई
द बेबी बॉय शुड बी देयर एटसेट्रा एटसेट्रा, कि बेबी जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो हम लोग का बुढ़ापे में काम आएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे बहुत सारा चीज जो एक्चुअली मिसकंसेप्शन है दिमाग में, धीरे धीरे अभी सुधार हो रहा है। उसका कारण है एजुकेशन। एजुकेशन इज द अल्टीमेट वे टू बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी। एजुकेशन नहीं है, अगर इलिटरेट होगा तो ऐसे प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो एजुकेशन शुड बी ए प्राइमरी थिंग्स होना चाहिए सबके लिए, एंड इसीलिए सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि ये जो थॉट है दिमाग से हटे, धीरे धीरे एक हेल्दी सोसाइटी फॉर्म करें, सेक्स इक्वालिटी आए। सेक्स इक्वालिटी विल बी ऑकर ओनली व्हेन द सेक्स रेशियो विल बी हेल्दी। अब देखिए केरला की बात कर लेते हैं। केरला में सेक्स रेशियो इज मोर इंक्रीज्ड सेक्स रेशियो है। मेल एंड फीमेल का सेक्स रेशियो देखा जाए तो फीमेल का नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। व्हाई सो? ना तो एजुकेशन इज 95 प्लस, 95 से भी ज्यादा परसेंटेज है आपका कौन सा ना एजुकेशन केरला में, एंड इट इज वेरी पुअर इन केस ऑफ बिहार। एंड इसीलिए बिहार में देखिएगा सेक्स जो रेशियो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। उसका कारण भी है, वहां पे अगर किसी लड़की का जन्म हो जाता है, मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे डाउरी का। भाई अगर किसी लड़की का जन्म हो गया तो उसका फादर जो है वो स्टार्टिंग से पैसा बचाना स्टार्ट कर देता है। अब पता नहीं उसको कितना लाख देना पड़ेगा, मिलता ही नहीं। उससे क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम स्टार्ट, एवरीथिंग इज लिंक। भाई एक गरीब आदमी कहां से देगा पैसा? तो डाउरी सिस्टम तो हो गया, एक एविल टाइप का हो गया। एंड आई कैन सी कि बहुत सारा ऐसा स्टेट है, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये पे डाउरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अच्छा लगता है देख के, समझ में आ रहा है? चलिए, and the last number 9 is research in reproductive health। ये था नंबर 8 एमनियोसेंटेसिस। नंबर 9 रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। यहाँ पे मैं सीधा एग्जांपल दूंगा आपको। सहेली, सहेली बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस रहता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। CDRI, Central Drug Research Institute, located in Lucknow, UP. And remember, सहेली एक्चुअली क्या है? नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल for female, and it is once a week। मतलब ये हफ्ते में एक दिन लेना पड़ता है, कुछ दिन के इंटरवल के बाद। पहले कुछ दिन ट्वाइस लेना पड़ता है, उसके बाद once a week। That is why the Saheli is popularly called as once a week pill। The Central Drug Research Institute, लखनऊ, नॉन स्टेरॉइडल है, इसीलिए बहुत पॉपुलर है ये। इट डज नॉट कंटेन एनी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है।
इसीलिए ये पॉपुलर है. साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है, इंडिजिनस प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑलमोस्ट वेरी लो कॉस्ट. सेकेंड थिंग, once a week. That is why it's one of the most popular contraceptive pills to be used by the Indians. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? ना ह्यूमन पॉपुलेशन.